Good evening, everyone, and welcome to today's webinar on markets, outlook, and strategy for the month of May 2024. See, during the election time, we tend to make a lot of comparisons and correlations and try to find out major deviations. Also, some comparison and correlations. Recently, I went through with few long-term charts and through a few specific charts for the year 2004, 2009, 2014, 2019, and we found that while 2014 is like more comparable in terms of technical analysis, there are many deviations in terms of fundamentals. So if we just compare this 2014 with 2024, which are like both election years, then in that, in terms of technicals, yes, there are like number of comparable things, but in terms of fundamentals, there are major deviations. And however, this combination of technical analysis and fundamental analysis provides conviction, confidence, and trust to handle this major event. If we just compare the current year's market with 2014 in terms of technical analysis, we can see that the markets are moving upwards due to the belief that the expected contender will win the elections. In 2014, the indices were trading at all-time high, and the same is true for 2024. However, the valuations were reasonable in terms of fundamentals in 2014, but this time they are expensive. Nevertheless, we can see strong earning momentum, a strong capex cycle, a super strong government balance sheet, and spending on infrastructure. Banks, especially PSU banks, have strong balance sheet in terms of low NPAs and decent book value. The ability to raise capital in the stock market has increased significantly, and the entire credit goes to consistent leadership as well as strong entrepreneurship and reforms. It is important to note that the market usually trades above or below the fair value, depending on the over-leveraged and under-leveraged positions. Currently, if we look at the broader trend of the market, then it is at its all-time high with a lot of overvalued valuations, as well as the positions are also at highs. Therefore, our positions should not be over-leveraged, or it should not be leveraged to the extent where we can find some difficulties to hold those positions if there is any quick jerk in the market. We need to be more and more stock specific, and we need to focus on near-term fundamentals. To know which stock specific stocks to invest and to understand the near-term fundamentals and macros, we need to turn to today's expert, Mr. Amit Agarwal. Over to you, Amit. Yeah, thank you, sir. I will just share the presentation. Is the presentation visible? Just one second. Not yet. Yeah, is it visible now? Yeah, it's okay. Thank you, Shrikant, sir. We'll just start the presentation. First, we will discuss about global indices, how they have fared in the month of April 2024. Global indices
were mostly negative in April 2024, with Indian indices outperforming with gains of around 1.5%. Hong Kong, Singapore, UK, Shanghai, Taiwan, and MSCI emerging markets gained marginally during the month, while there was weakness in Japan, Korea, Brazil, Germany, US, Indonesia, and Thai markets, which ended in negative zone in April 2024. इसका मेन कारण यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और एलिवेटेड ग्लोबल इन्फ्लेशन, ये दो थीम ने मार्केट्स को डोमिनेट किया अप्रैल 2024। और ग्लोबली मार्केट्स में काफी कॉशन है बिकॉज सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट स्टिल अभी भी फ्रेजाइल है। नाउ वी विल सी अबाउट सेक्टोरल परफॉर्मेंस। अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस देखें तो मोस्ट इंडाइसेस गेन्ड इन ग्रीन इन 2000 अप्रैल 2024। इसमें सबसे ज्यादा उछाल हमने देखा था बीएससी मेटल्स और बीएससी यूटिलिटीज में विद गेन ऑफ अराउंड 10%। इसमें हमने काफी मोमेंटम देखा इन स्टॉक्स लाइक वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक स्टील, नाल्को, अदानी पावर और टाटा पावर। टेलीकॉम ने भी काफी बढ़िया किया है अप्रैल 2024 पे विद फंड रेजिंग डन बाय वोडाफोन आइडिया एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ टैरिफ इंक्रीज पोस्ट जनरल इलेक्शंस। रियलिटी, एफएमसीजी, ऑटो, बैंकेक्स और oil and gas capital goods gained between 2 to 5%. IT was slightly weak with loss of around 4.5%, primarily due to weakness in global markets. Now let's look at the situation in developed markets. अगर हम developed markets का situation currently देखें तो US GDP बढ़ा है 1.6% से in Q1 of CY24 versus expectation of 2.4%, with inflation for the same period increasing around 2.7%, which was well above the Fed's target of 2%. अगर ग्रोथ रेट स्लो रहता है और इन्फ्लेशन हाई रहता है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फेड इंटरेस्ट रेट कट इन 2024 will be low, which will be negative for markets. Yesterday, that is 1st of May, Fed held rates again and उन्होंने रेड फ्लैग किया था कि डिसअपॉइंटिंग इन्फ्लेशन रीडिंग जिसकी वजह से रेट कट्स डिले हो सकता है। सिमिलरली इकोनॉमी इन द यूरोजोन थोड़ा सा मोमेंटम पिक कर रहा है। पीएमआई का जो फ्लैश पीएमआई अप्रैल का आया है उसमें यूरोप rose the PMI rose unexpectedly to 51.4 points, which was highest in 11 months, pointing to growth in the output, economic output. Asia में China has grown 5.3% in first quarter, which was a positive surprise. With mixed signals on growth and inflation from globally, we expect inflation and interest rates to remain elevated for a longer period of time. बड़ा क्वेश्चन ये है कि हैज इंडिया रियली डिकपल्ड और डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस लास्ट कुछ महीनों में काफी स्ट्रांग रहा है डिस्पाइट ग्लोबल इश्यूज एंड वीक ग्लोबल मार्केट्स, which reflects faith put by investors on India. The flash composite index for April was 62.2 compared to 61.8 for March, indicating strong growth momentum in the economy already, which is already very robust and is strengthening further. April GST collections भी काफी strong आए हैं, which was highest at 2.1 lakh crores, driven by rise in domestic transaction and also due to higher compliance. FY24 में total GST collections था 20.14 lakh, which equates to around 1.68 lakh crores per month in FY24, higher from 1.5 lakh crores in FY23. Strong GST collections के वजह से इंडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट की तरफ से काफी बूस्ट मिल सकता है। FII FPI flows have also been strong in FY24. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FII flows और FPI flows FY25 में भी strong रहेंगे, especially post-election results, which is expected to form a stable government and reasonable macroeconomic situation, which includes strong GDP growth, manageable balance of payment situation,
fiscal and also a manageable inflation. तो हमारा bottom line ये है कि India will continue to hold well. We believe India is better placed compared to other countries, and we expect real GDP growth of 6.6% in FY25 and 6.5% in 26, factoring in continued government capex, a delayed global growth slowdown, and continued tepid consumption growth. अभी ये टेबल बताता है कि how strong FPI SIP flows have been in India. The flows have increased from 4,300 crores per month in FY17 to average of 14,000 crores per month in FY23 to 17,000 crores per month in FY24. In fact, अगर आप FPI flows देखें जैन फेब मार्च का वो 19,000 करोड़ पर महीने पहुंच गया है विथ रीजनेबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिगर 25,000 करोड़ पर मंथ पहुंच सकता है इन द नेक्स्ट 2 years, which will provide a big support to the market. Now let's have a look at the India inflation and monetary policy action by RBI. मार्च का जो इन्फ्लेशन फिगर्स आया है वो है 4.9%, which moderated from 5.1%, which was led by fall in food inflation. Similarly, core inflation moderate हुआ है to 3.3% from 3.4% in February. IIP भी काफी बड़ा उछाल देखा है to 5.7% from 4.1% in January, which was led by favorable base effect and with all the categories registering positive growth except for consumer. This was primarily because of temperatures causing volatile food inflation, geopolitical risk, and higher non-energy food commodity prices. हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि FY21-5 में एवरेज इन्फ्लेशन रहेगा 4.5% और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 basis repo rate cut, which will start only in the third quarter of FY25. So overall, we are bullish on India in FY25. India का जो macroeconomic situation है अभी भी काफी reasonable appear करता है with strong GDP growth rate, manageable balance of payment and fiscal situation, and also controlled inflation. However, we find most sectors and stocks quite overvalued. Valuation का जो असेंडिंग ऑर्डर में आप देखें तो वो है हायर इन लो मार्केट कैप कंपनीज, लो क्वालिटी स्टॉक्स एंड हाई रिस्क कंपनीज. हमें ऐसा लगता है इंडियन मार्केट कुड सी अ पीरियड ऑफ एंड कंसोलिडेशन पोस्ट रीसेंट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. ओवरऑल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट्स ऑफ निफ्टी 50 टू ग्रो एट 9.4% इन FY25, which translates into EPS of 1079, and grow by 12.9% in FY26, which translates into EPS of 1226. और 22,570 पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है 20 times FY25 and 18.4 times FY26. FY25 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ थोड़ा ब्रॉड बेस रहे. ऐसे valuation situation में and with high optimism amongst investors with respect to volumes from companies' profitability and return ratios, our key suggestion to investors is to be very stock specific, selecting companies with good business model, strong corporate governance, healthy balance sheet, and also healthy return ratios. Any correction in the markets can be used to add quality stocks from long-term perspective. We recommend investors to keep a close watch on global factors and be very stock specific. Now this chart shows how valuations of Indian markets are quite rich. Nifty 12-month forward is currently well above its long-term average. Our markets can be very good in FY25 with BJP-led NDA government expected to form government, leading to a stable government and stable economic policies. Plus, India already has a very robust macroeconomic situation with stable inflation and sustainable growth rate.
This chart shows a 1 year forward P of different economies. This chart depicts India is the most expensive market, trading at almost 20.2 times December 25 earnings. Malaysia at 13 times and Thailand at 12.9 times, while other economies of BRICS like Brazil, Russia, Indonesia, China trade between 9 to 13 times. December 2025 earnings. Average for emerging markets is 10.7, while developed economies like Japan and US with expectation of earnings growth of around 12% in CY25 also trade at the expensive valuation of 19.7 times and 19.6 times December 25 earnings respectively. However, it is important to note that India has always been trading very expensive due to its high growth factor and will continue to trade at stretch valuation. We believe any market correction combined with the current optimist environment can be used to add quality stocks from long-term perspective. Was factoring in everything, we have identified 9 investment ideas for May 2024. These investment ideas include Scient, Landmark Life Sciences, Gravitas India, Hindustan Unilever, ICICI Bank, Indian Hotels, Mahindra Holidays, Neen Chemicals, Shriram Finance. I will briefly take you through Hindustan Unilever. We have an ad rating on Hindustan Unilever with a target price of 2625. We have been consistently positive on the stock despite weak operational and financial performance in recent quarters. Everybody would have used Hindustan Unilever product sometime in their life. ये एक ऐसी कंपनी है जो कंज्यूमर स्टेपल्स में हर एक प्रोडक्ट बनाती है and with widespread distribution reaching the remotest part of India. In Q4, underlying sales growth was 1% and underlying volume growth was 2%. Both were in line with our moderate estimates. The weakness in growth was primarily due to weakness in rural demand. However, Hindustan Unilever expects a gradual improvement in FMCG demand and its hopes are hinged upon midterm impact of better monsoons and improving macros. Management expect pricing to also turn single digit positive by end of FY25. About 75% of Hindustan Unilever's business reporting is growing at mid to high single digit. Currently, it has a total of 19 brands with 1,000 crore plus contribution, almost contributing 90% to the total top line, or 3 more brands which includes Boost, Sunsilk, and Vaseline, are moving towards the 1,000 crore mark. In medium to long term, management is confident that rural as FMCG consumption will recover. We are expecting things to improve structurally for FMCG companies and Hindustan Unilever in the next 2 quarters. And we are positive on the stock, and we have a ad rating on the stock with a target price of 2625, implying 50x June 2026 earnings. That's it from my side. Over to Amarjit. Thank you, Amit. So we have a next stock, Gravita India, and we have a fair value is 1,200 and buy rating on that. So Gravita India is in the business of recycling lead scrap, aluminum scrap, plastic scrap, and rubber scrap with the plants across the multiple domestic and international locations. There are few points which like in this company. अगर हम पहला point बोले तो the organized for this industry organized unorganized market is 65%, and over the period of time हम expect कर रहे हैं कि organized player will gain the market from the unorganized. So अभी 65% market share unorganized का ये shrink हो जाएगा because of policy trend win. So 28 में we are expecting 25% unorganized space का market share रहेगा और बाद में 33 में 10% रहेगा. तो shift होगा from unorganized to organized और इसको benefit मिलेगा just like a player like Gravitas. Currently Gravitas has a 6% market share and eventually जैसे जैसे industry grow करेगा definitely company को benefit मिलेगा. Apart from that, company has a expansion plan
which give a visibility to growth and diversification. Company is planning to spend 6.4 billion, which is approx 640 crores over 24 to 26, और 85% 86% approx capacity बढ़ाएंगे, so which will give a benefit to company to cater the increasing in demand. So we are expecting over the 23 to 26 top line will be grow 20% CAGR and revenue will grow, profit will grow around 22% CAGR, और जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 35% CAGR. सो हमने काफी कंजर्वेटिव फैक्टर किया है कंसिडरिंग द मैनेजमेंट गाइडेंस. सो ओवरऑल वी हैव अ टारगेट ऑफ 1200 और 23x P of 23x of FY26 EPS. So next talk for Arun. Yeah, thank you, Amarji. I'll talk on Indian hotels. So Indian hotels अगर आप देखें तो they are the largest player on India's hospitality sector. They have got a very wide presence. अगर मैं wide presence की बात करूं तो उनका portfolio एक तो diversified है. They are there across geographies, price points and even profile. जैसे उनके brands में आते हैं ताज, विवांता, Selections और Ginger. So their presence across mid और premium segments में है, and they're also they're equally present well in both business और leisure locations पे है. अगर आप उनकी टोटल इन्वेंट्री देखें इंडियन होटल्स की, तो उनकी टोटल जो ऑपरेशनल इन्वेंट्री या रूम्स है वो है अराउंड 24,136 के आसपास, जिसमें कि 13,813 ओन्ड कीज है और 10,323 उनकी मैनेज्ड कीज है. Now going forward, Indian hotels they're looking to add around 12,953 more keys over the next 4 years, जिसमें कि 2,717 यानी 2,800 के आसपास अराउंड ओन्ड कीज होंगी और अराउंड 10,174 वुड बी मैनेज कीज. सो तो ग्रोथ जो है इन टर्म्स ऑफ कंपनी का जो दे आर एडिंग सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ न्यू होटल रूम्स गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 4 years. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कंपनी का कैश फ्लोज देखें तो उनका FY24 में इनफैक्ट कैश फ्लोज जो उन्होंने ऑपरेशनल कैश फ्लो जनरेट किया था दैट वाज अराउंड 1,740 crore rupees, और उनकी जो बुक्स के ऊपर नेट कैश है दैट्स अराउंड 1,200 crore rupees एज ऑफ मार्च 2024. इफ यू लुक एट Q4 परफॉर्मेंस, उनका रिजल्ट लास्ट वीक ही आया था, तो Q4 में अगर आप देखें उनके रिजल्ट में तो उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फोर्थ क्वार्टर में 17% से इंक्रीज हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और उनकी जो एबिटा है दैट इंक्रीज बाय अराउंड 23% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस. अगर हम होटल इंडस्ट्री को देखें तो अगर इंडस्ट्री का अगर कोई डेटा पॉइंट ले, जैसे कि हमारे पास फेब के कुछ नंबर्स हैं, तो फेब में रूम रेट्स जो रहे थे इंडिया में दे हैड स्केल्ड अ न्यू पीक, और दिस वाज डिस्पाइट हेल्दी ऑक्यूपेंसी. तो ऑक्यूपेंसी भी हेल्दी रहा है और रूम रेट्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, स्ट्रांगली इंक्रीज हो रहे हैं. इसके अलावा जो सप्लाई आ रही है न्यू रूम्स की या न्यू होटल्स की कहेंगे, तो जो टियर 1 सप्लाई आ रही है वो उसका कंसंट्रेशन जो टियर 1 सिटीज में है वो काफी लो है. तो ये लिस्टेड होटल कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव है. सो ब्रॉडली वी रिमेन पॉजिटिव ऑन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो इंडिया में है, ओविंग टू फेवरेबल डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स. इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ अगर हम देखें इंडियन होटल्स की, तो we are looking at an earnings per share EPS growth of around 60.5% in FY25 and 25.6% in FY26. So that's a pretty strong growth we are looking at for them in terms of earnings growth. And these kind of earnings growth, keeps us positive on the stock, whereas we have seen the stock run up. But then even though looking at the growth, we remain positive on the stock. Our fair value on the stock is 640 rupees. We have an ad rating on the stock. That's it from my end. Over to Pankaj. Thank you, Arun. So next stock here that is also in the hospitality space, but it is having a different business model. Mahindra Holidays, which is basically operating on the membership based model, जहाँ पर वो holidays offer करते हैं अपने members को for a particular tenure by paying members can avail this product by paying certain price. सो यहाँ पर ये जो बिजनेस मॉडल है इसमें जो मेंबर्स हैं या जो कस्टमर हैं उनको एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए एक तरह से इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि अभी करंट सिनेरियो में इफ यू आर सीइंग द ARRs आर मूविंग एंड सो दैट काइंड ऑफ चैलेंज इज नॉट देयर विद द मेंबर्स विद महिंद्रा हॉलिडेज. और बिजनेस मॉडल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे इट्स अ रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल बिकॉज दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स, सीजन्स एंड ऑल. सो इसकी वजह से कैश फ्लो काफी स्ट्रांग रहती है कंपनी की. सो कंपनी के स्टैंडर्ड बुक्स पे करीबन 1380 करोड़ का कैश फ्लो है, और इनके जो ग्रोथ प्लान्स हैं अभी करीबन 5,300 रूम है. कंपनी इंटेंड्स टू
almost double it to 10,000 room inventory by FY30. सो ये पूरा करीबन 4,500 crore का जो कैपेक्स है उनका थ्रू ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड एंड पीपीपी मोड, दैट विल बी लार्जली फंडेड थ्रू इंटरनल अक्रूअल्स, बिकॉज वो करीबन 250 से 300 crore का फ्री कैश फ्लो हर साल जनरेट करते हैं। और मैनेजमेंट की जो व्यू देखेंगे उनके यूरोपियन बिजनेस के बाद, क्योंकि बिकॉज दैट इज अ रिलेटिवली चैलेंजिंग सिनेरियो ओवर देयर, and the last quarter the company has reported profit even at the PAT level. So in the challenging time that business is doing well, और ये काफी पॉजिटिव न्यूज। ओवरऑल अगर उनका लेटेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे तो FY24 में दे हैव अचीव्ड द गाइडेंस ऑफ अराउंड 20,000 न्यू मेंबर एडिशंस, और जहां तक रूम एडिशंस की बात कर रहे हैं जो कि दे आर एडिंग अनदर 5,000 रूम इन्वेंट्री, सो पर रूम अगर वो 58-56 मेंबर्स भी ऐड करते हैं, यू कैन इमेजिन दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर नेक्स्ट 5 years इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप ग्रोथ। सो यहाँ पर हमारा जो फेयर वैल्यू है 475 का, दैट इज अराइव बेस्ड ऑन द सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन, जहां हमने DCF बेसिस पे स्टैंड अलोन बिजनेस को वैल्यू किया है, एंड जो यूरोपियन सब्सिडियरी है उसको वन टाइम बुक वैल्यू दिया है। सो महिंद्रा हॉलीडेज पे हमारा एड रेटिंग है फेयर वैल्यू 475। नेक्स्ट टॉप प्लीज। सो नियोजन केमिकल्स, दिस इज इन स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां पर हमने रिसेंटली इनिशिएट किया है कवरेज, और यहाँ पर हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। वी हैव अ बाय रेटिंग एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1840। इसका अगर बिजनेस आप देखेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग फील्ड में है, जो कि फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, दैट इज फॉर द बैटरी EV बैटरी केमिकल स्पेस में, where the opportunity is huge and the growth projections that we are looking at is quite strong. We are like expecting around 30 to 40% revenue and earnings CAGR over 23 to 29. आप अगर इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है इन टर्म्स ऑफ ब्रोमीन एंड लिथियम बैटरी केमिकल्स जो स्पेस है वहां पर, एंड 30 years प्लस एक्सपीरियंस रहा है वहां पर। अगर हम ये स्टॉक का की रैशनल जो 2-3 मेजर रैशनल है क्यों हमें अच्छा लगता है, बिकॉज द कंपनी इज हैविंग हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस वेल रिगार्डेड प्रमोटर, व्हिच इज सपोर्टेड बाय PI इंडस्ट्रीज एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अनुराग सुराना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है ऑफ रैपिड ग्रोथ enabled by innovation and enterprise, एट द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इसकी जो पार्टनरशिप है विद द लार्ज ग्लोबल जो नेम्स है लाइक मित्सुबिशी। ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक हमें काफी अच्छा लगता है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। यहाँ हमने DCF बेसिस पे जो टारगेट प्राइस अराइव किया है 1840 का है, और हमारा व्यू है बाय ऑन दिस स्टॉक। ओवर टू वीवा। सुबह। थैंक यू पंकज। सो फार्मा सेक्टर में से जो स्टॉक इस बार हमने चुना है वो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, जहाँ पे हमारी रेटिंग बाय है और फेयर वैल्यू है 900 रुपीज। सो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की अगर बात करते हैं तो हालांकि हमें पता है कि पिछले कुछ महीनों में ही इनका एक्विजिशन हो चुका था निरमा से, एंड निरमा ने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है, अक्वायर किया है इस कंपनी को पूरी तरह से, एंड नाउ द इंटीग्रेशन हैज बीन डन. So Glenmark Life Science has a very high capital available for investments into newer technologies, newer therapies, so they can grow quite well. इसके अलावा अगर हम जेनेरिक API और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पे भी काफी हेल्दी डिमांड रही है काफी पिछले कुछ सालों में, और आगे भी ये रहने वाली है. सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो पोर्टफोलियो है उसमें हम 10 to 11% वॉल्यूम ग्रोथ देख सकते हैं आगे चल के भी. जहां तक FY25 की बात है तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि सेल्स में आप लो टू मिड टेन का ग्रोथ देख सकते हैं, जबकि EBITDA मार्जिन आप उनकी रहेगी 28 to 30% के बीच में. अगर हम देखें तो ये क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े वीक थे बिकॉज 2-3 चीजें थी. फर्स्टली उनकी PLI स्कीम से जो इनकम आ रही थी पिछले साल में वो अब ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है. एंड दूसरा रीजन जो है वो थोड़ा जो हमने पिछले कुछ वेबिनार में काफी बार हाईलाइट किया हुआ है कि फ्रेट कॉस्ट काफी ऊपर जा रहा है. रेड सी क्राइसिस भी हुआ था और ईरान इराक की वजह से भी तो दूसरा रूट है वहां पे भी इश्यूज थी. तो दोनों रूट्स में जब आपका सी रूट हो जो जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है एक्सपोर्ट्स में,
तो वो फ्रेट कॉस्ट पे ज्यादा प्रेशर डाल देती है और कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से सारे एक्सपोर्ट कंपनीज की मार्जिन पे थोड़ा बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया है। तो ये कॉमेंट्री भी मैनेजमेंट ने करी है कि अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए वो इसको मॉनिटर करेंगे और उसका इम्पैक्ट थोड़ा रह सकता है। बट अदरवाइज बाकी सब फ्रेट कॉस्ट को छोड़ते तो उसको अलावा सारी आउटलुक बोले, डिमांड बोले, दैट्स ऑल इन फेवर ऑफ द कंपनी। हम इस स्टॉक को 18 टाइम्स FY26 के अर्निंग्स पे वैल्यू कर रहे हैं एंड वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 900। ओवर टू यू सुमित। Thank you very much. Next stock is from IT sector. In IT sector, our top pick in mid cap space is Cyient. We are recommending buy with a fair value of 2,275 rupees. जैसा कि आपने देखा होगा कि IT सेक्टर में ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं काफी इंप्रेसिव नहीं है, तो डिमांड पे साइड में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। तो इसके लिए साइंट जिसका मैनेजमेंट का फोकस काफी स्ट्रांग है और वेरी स्मार्टली उन्होंने क्या किया, अपना रेवेन्यू मिक्स को डाइवर्सिफाई कर लिया है। उनके पास कैपेबिलिटीज है जो एग्जिस्टिंग जहां पे डिमांड थी उसको उन्होंने मीट की काफी हद तक, और उन्होंने देखा कि कई और स्पेसेस में अगर डिमांड क्रिएट हो रही है तो वो उधर भी केटर करना चालू कर दिया है। तो ये एक स्मार्ट मूव बोलूंगा मैं मैनेजमेंट की तरफ से, टू डाइवर्सिफाई अपना रेवेन्यू स्ट्रीम्स। पहले एक ही सेक्टर, एक या दो तीन चार वर्टिकल से आते थे, यू हैव एडेड मोर वर्टिकल्स, तो आपको रेवेन्यू मिक्स डाइवर्सिफाई हो गया। अगर कहीं एक वर्टिकल में डिमांड से प्रेशर आएगा तो दूसरा जो नया वर्टिकल ऐड किया है वो आपको उसका कंपनसेट कर देगा। उसके बाद में उन्होंने काफी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस किया है कि उनके मार्जिन को इम्प्रूव कर सके किसी तरीके से, और कैपेबिलिटीज एनहांस करने की कोशिश करी है, पर्टिकुलरली जो सेक्टर्स में अभी काफी डिमांड है, लाइक डिजिटल इंजीनियरिंग, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, VLSI। सो यहाँ पे जो अपकमिंग जो भी न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, मे बी ऑटो सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, वहां पे और ज्यादा फोकस करके और कैपेबिलिटीज बढ़ा के उन्होंने जो जहाँ पे निश एरियाज जिसको बोलते हैं वहां पे फोकस करके डिमांड कैप्चर करने की कोशिश करी है। इन सब मेजर से हमें लगता है कि विच विल एड इन इम्प्रूविंग द मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक, और जो नैरोइंग ग्रोथ डिफरेंशियल वर्सेस पीयर्स, जो इसके पीयर्स जो ग्रो कर रहे हैं उसके जो ग्रोथ रेट में है वो जो काफी वेरिएशन होगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा। जब मैं ये सब बातें कर रहा हूँ तो इसका एक सिंपल नंबर्स में अगर अपन बात करें कि ये नंबर्स में भी कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं कर रहा, ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि नहीं। अगर ऑर्डर मिल रहे हैं तो आप जो काम कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो, और अगर नहीं मिल रहे हैं या उम्मीद कम है मिलने की तो आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। सो ब्रॉडली यहाँ पे ऑर्डर इनटेक काफी इम्प्रूव हुआ है, ऑलमोस्ट 15% ऑन कंपेरेबल बेसिस पे हुआ है इन FY25। सो जो मैनेजमेंट का फोकस है और जो उन्होंने स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करी है उसके कारण उनका ऑर्डर बुक इम्प्रूव हुआ है, वहां पे हमें काफी कॉन्फिडेंस है। वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल लग रहे हैं इस पॉइंट इन टाइम। सो हमको लगता है साइंट आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मिड कैप IT space, this is our top pick. That's all from my side. Hand over to other analysts. Thank you, Sumit sir. Hello to all. So from the banking space, ICICI Bank is one of our top picks. Now, this has been one of those banks जिसने consistently काफी अच्छा performance दिया है across many quarters, और ये ट्रेंड Q4 FY24 में भी मेंटेन रहा है। तो Q4 FY24 में एक अच्छा लोन ग्रोथ दिया 16% का, deposit growth was strong at 19.6%. Now, due to the deposit growth being higher than the loan growth, बैंक का जो CD रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये इम्प्रूव हुआ टू 82%। नाउ ये जो CD रेशियो है ये आज के एनवायरनमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक बन गया है टू जज अ बैंक। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, द लोअर द CD रेशियो द बेटर इट इज, एंड लोअर द CD रेशियो द बैंक वुड बी एबल टू गिव आउट मोर लोन्स फ्रॉम द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। Therefore, आप बैंक्स के CD रेशियो साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं। ये बैंक का जो कासा रेशियो है इट इम्प्रूव टू 42% और सिक्वेंशियली इम्प्रूव हुआ है। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो इट वाज फ्लैट
and stood at 4.4%. Now अभी industry level पे it is expected that the cost of fund would peak out in a quarter or two, and therefore there is no significant downside risk to the NIM for this bank. Asset quality की बात करें तो it remains very healthy. Bank का GNPL ratio is at multi-quarter low and it came out at 2.3%. Bank का NNPL was also very solid at 0.5%. And therefore overall बैंक ने एक अच्छा net profit growth दिया Q4 में of 17.4%. So as you can see across parameters बैंक ने consistent growth दिया है, and therefore and we believe कि ये जो performance रहा है ये across quarters maintain रहेगा, and therefore ICICI Bank जो एक higher multiple demand करती है over other banks ये maintain रहेगा. Thus we have a buy rating on ICICI Bank with a fair value of 1,300. Now moving on to the next stock. So Shriram Finance is another stock which we like from the BFSI space. Now not very long ago श्रीराम फाइनेंस का मर्जर हुआ था विद श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, और इसके बाद इसका जो लोन बुक है इसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था. सो इनका जो लोन बुक था इट यूज्ड टू बी वेरी हेवी इनटू सीवी कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग, जो अब घट के 49% हो गया है. और इनके लोन बुक में अभी यू हैव गोल्ड लोन, यू हैव पर्सनल लोन, यू हैव टू व्हीलर लोन, यू हैव एमएसएमई लोन्स. सो ये सिनर्जी के, ये मर्जर के बैंक, ये एनबीएफसी को 3 फायदे हुए हैं. नंबर 1 फायदा ये है कि नाउ द बैंक इज एबल टू ग्रो इट्स बुक एट अ रिलेटिवली फास्टर पेस. नंबर 2, बैंक के जो मार्जिन है ये अब स्ट्रक्चरली इंप्रूव हो गए बिकॉज ये जो नए प्रोडक्ट्स है इट हैज अ हायर यील्ड. एंड थर्डली इनके जो लोन बुक में साइक्लिसिटी के एलिमेंट थी ड्यू टू हायर डिपेंडेंस ऑन सीवी, ये भी अभी कम हो जाएंगे. नाउ आर ऑल दिस पॉजिटिव्स रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर नंबर्स और नॉट? इट इज रिफ्लेक्टिंग. अगर हम इनके Q4 के नंबर्स देखें, सो फॉर FY24 फुल ईयर ये एनबीएफसी ने लोन ग्रोथ दिया 21% YOY का. दिस लोन ग्रोथ ऑफ 21% was above what the management has guided for. निम देखे तो ये बैंक ने 9.3% का निम दिया. 2 साल पहले दिस निम यूज टू बी 7.3% लेवल. सो एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इन निम हमें देखने मिलता है. एंड फाइनली एसेट क्वालिटी की बात करें तो Q4 FY24 में जो ग्रॉस स्टेज 3 लोन्स था ये बैंक का इंप्रूव हुआ to 5.5% from 6.2%. And therefore, due to all these factors, एक bottom line में बहुत अच्छा growth दिखा of 48.7%. We expect कि ये अच्छा performance बैंक का maintain रहेगा. We like the direction in which the bank is going, and the valuations are also at good levels. And इसीलिए we have a strong buy on this stock with a fair value of 3,000. Thank you. That's it from my side. Thank you. Thank you, viewers, for all the questions that you have posted. So we will answer all these questions one by one. And in the meanwhile, if you all have any other further questions, please post it in the chat box. We'll try to address as much as we can. So today's first question is, since there is a lot of queries on IT, Sumit, I'd like you to begin that there are multiple stocks that the viewers would like to know about. So one being that if you could share your view on Wipro, Techem, and Coforge. Okay. So broadly, I will divide my view into 2 parts. First is short-term view or medium-term and a long-term view. So for short-term or medium-term view is there. अभी भी आप देख रहे हैं यूएस में इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुई है, केवल बातें हो रही है. वहां पे कुछ मीटिंग्स में उधर पॉजिटिव साइड टिल्ट हो जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होगी, और फिर कुछ मीटिंग में इन्फ्लेशन अगर ऊपर आता है तो अगेन डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही. एज ए रिजल्ट जो एंटरप्राइज है या जो आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, दे आर अनसर्टन अबाउट वेदर टू इन्वेस्ट इन आईटी और नॉट. सो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये डिले हो रही है. इस डिले के कारण यहाँ पे इंडिया में जो आउटसोर्सिंग का वर्क है वो पोस्टपोन हो रहा है. कुछ ऑर्डर्स जो कंपनी ने पहले बिड करके दे रखे थे वहां पे या तो क्लाइंट्स ने रीस्कोपिंग ऑफ वर्क कर दिया है, पोस्टपोनमेंट हो गए हैं, कहीं कहीं जगह पे कैंसिलेशंस भी हुए देखने को मिले हमें. सो नटशेल में शॉर्ट टर्म में देयर आर सम चैलेंजेस व्हिच द एंटायर
global IT space is facing. Secondly, जो जनरेटिव AI है आया है, उसके कारण डिमांड एनवायरनमेंट नई सर्विसेज की काफी इंप्रूव हो रहा है। तो इंडियन आईटी कंपनीज अपने आप को स्केल अप कर रही है टू केटर टू दैट डिमांड, और गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी वहां पे अपने को। तो शॉर्ट टर्म में विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोज और टाटा टेक्नोलॉजीज, हमें लगता है यहाँ पे काफी हद तक वैल्यूएशन में स्टोरी कैप्चर्ड है ऑलरेडी। वैल्यूएशन स्लाइटली एक्सपेंसिव लग रहे हैं। टेक महिंद्रा में पर्टिकुलरली बात करें तो जो मैनेजमेंट चेंज हमने देखा है, उन्होंने काफी अच्छी गाइडेंस दी है, बट हमें लगता है कि एक थोड़ा एग्जीक्यूशन इज नॉट दैट इजी इन ए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, और पर्टिकुलरली जब आपका काफी रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स में, वर्टिकल्स में वी आर फोकसिंग। सो ये शॉर्ट टर्म में ये सब स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए हम लोग इनको अवॉइड करेंगे, ये हमारा नेगेटिव व्यू है। बट अगर आपको आईटी स्पेस में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आप सायंट देख सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं सायंट। HCL टेक्नोलॉजीज बाय कर सकते हैं, इन्फोसिस बाय कर सकते हैं, और TCS बाय कर सकते हैं। हम लोग ये बड़ी कंपनी इन्फोसिस, TCS पे क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज इनके पास जो कैपेबिलिटीज है और जो सर्विसेज देते हैं वो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज है। दे आर नॉट restricted to one vertical, they are catering, or they have the capabilities to cater to multiple sectors. तो जो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज देने की जो इनकी कैपेबिलिटीज है, उसके कारण क्लाइंट्स इनको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दे देता है। इनफैक्ट जो दूसरे कस्टमर्स है, तो जो दूसरी कंपनीज है जो क्लाइंट को केटर कर रही है, तो उसका वॉलेट शेयर भी ये गेन कर रहे हैं। सो क्लाइंट, इसको बोलते हैं क्लाइंट कंसोलिडेशन। क्लाइंट कंसोलिडेशन में ये बड़ी प्लेयर्स लाइक TCS, इन्फोसिस, इनको फायदा मिल रहा है। एक इनका बड़ा साइज होने का इनको अभी डिसएडवांटेज है बिकॉज मैक्रोज आर चैलेंजिंग, बट हमें लगता है कि जो कैपेबिलिटीज इनमें है, जो बैंडविथ है इनके पास में, और जो मार्जिन लीवर्स हैं, ये इवेंचुअली दे विल फ्लाई लाइक एनीथिंग। तो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पॉइंट क्रिएट करने के लिए आप ये सारे स्टॉक देख सकते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ व्यूअर्स के लिए, सायंट, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS। और शॉर्ट टर्म में विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, टाटा टेक्नोलॉजीज। थोड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा इनके। ओवर टू यू। थैंक यू सुमित, दैट वाज रियली हेल्पफुल। काफी व्यूअर्स को टाटा टेक्नोलॉजीज को लेके बहुत क्वेश्चंस थे कि क्या करना चाहिए, तो आपने वो जवाब पहले ही दे दिया, तो आई एम श्योर दे विल बी ऑल हैप्पी। अगला सवाल अरुण आपके लिए है। इफ यू कैन शेयर योर व्यूज ऑन अशोक लेलैंड। ऑलराइट, सी अशोक लेलैंड पे अगर आप देखें तो लास्ट फुल 1 ईयर में वॉल्यूम्स में काफी फ्लैटिश रहा है। तो आप अगर FY24 देखेंगे तो कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो फ्लैट रही है। इनफैक्ट नवंबर से लेकर के मार्च तक कंपनी की वॉल्यूम्स में हमने मंथ ऑन मंथ अगर मैं देखूं, नवंबर टू नवंबर ऑफ लास्ट ईयर एंड दिसंबर टू दिसंबर, तो ये पीरियड में हमने देखा है कि कंपनी की जो ओवरऑल वॉल्यूम्स थी वो एक्चुअली डिक्लाइन हुई है। नाउ अप्रैल में जो नंबर्स आए हैं वहां पर हमने देखा है कि कंपनी ने इस बार 10% और वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। एंड पॉसिबली स्टॉक भी आप देख रहे होंगे कि रिसेंट लास्ट एक वीक और सो में स्टॉक में थोड़ा सा हैज सीन सम अपवर्ड मूवमेंट, अदरवाइज स्टॉक वाज कंसोलिडेटिंग एट सर्टेन इन अ पर्टिकुलर रेंज, तो वो भी थोड़ा सा वहां से निकला है। बट ओवरऑल अशोक लेलैंड पे अगर आप ये Q4 का भी नंबर देखिए तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन यही है, बिकॉज हमने कहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फोर्थ क्वार्टर में वॉल्यूम वीक थी तो रेवेन्यूज में डिक्लाइन रहेगा कंपनी के, बट मार्जिन्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे कंपनी की इंप्रूवमेंट रहेगी, पैट भी ग्रो करेगी कंपनी ये फोर्थ क्वार्टर में। बट ओवरऑल अगर आप देखें सीवी सेगमेंट को लेके, जहाँ पर अशोक लेलैंड का एक्सपोजर काफी हाई है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का, वहां पर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो थोड़ी मॉडरेट करेगी। तो जनरली क्या होता है कि सीवी सेगमेंट में जो वॉल्यूम ग्रोथ होती है वो काफी वोलेटाइल होती है। जैसे मैं आपको अगर लास्ट 4-5 ईयर्स के नंबर्स कहूँ तो हमने कोविड में देखा था कि FY20 में वॉल्यूम 37% से डिक्लाइन हुई थी कंपनी में, FY21 में हमने 20% डिक्लाइन देखी थी, फिर उसके बाद 27% और 50% ग्रोथ देखी है 2 साल हमने। सो और लास्ट ईयर काफी फ्लैटिश वॉल्यूम था, जस्ट 1% ग्रोथ रही थी कंपनी की वॉल्यूम्स में। सो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि करंटली वॉल्यूम थोड़ा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मॉडरेट हो सकता है,
और उसके वजह से हमें लगता है कि जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है वो सस्टेन होना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अशोक लेलैंड के लिए। तो अब एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारी कंपनी में रिड्यूस रेटिंग है, बट विल अगेन रिव्यू अ रेटिंग। एक बार उनका रिजल्ट फोर्थ क्वार्टर का आएगा तो विल बी रिव्यूइंग अ रेटिंग एंड मे बी फेयर वैल्यू एज वेल पोस्ट दैट। थैंक यू अरुण। So next question, Amit, आपके लिए है. If you can share some view on ITC, please. Yeah. See, ITC, we have an ad rating with a target price of 460. ये एक स्टॉक है जिसपे हम लोग कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहे हैं और लास्ट एक साल में स्टॉक ने आउट परफॉर्म भी किया है विद गुड रिटर्न्स. Currently, we have an ad rating with a target price of 460. In case of cigarettes, there is stability in taxation, which was backed by deterrent actions by enforcement agencies with green shoots of volume recovery from illicit trade. Cigarettes currently is very stable for the company. There is strong performance in FMCG with strong margins against other FMCG companies, which is facing significantly low volume growth. There is also sharp rebound in hotels, average room rates and occupancy, which is quite ahead of the pre-pandemic levels. Agribusiness has been showing good trajectory, while paper and paperboard also continue to deliver strong performance. There is strong performance in paper and paperboard segment across end user segment. So overall, अगर आप देखें तो ITC offers a holistic growth environment with visibility, strong visibility in cigarette growth and a relatively steady performance in FMCG. अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है. इट इज स्टिल ट्रेडिंग एट 50% डिस्काउंट टू लार्जर एफएमसीजी प्लेयर्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर. डिविडेंड यील्ड भी काफी हेल्दी है ऑफ अराउंड 4.5%. Double digit earning growth expected over the next 2 financial years. Or there is good recovery in cigarettes, hotels and FMCG. तो ओवरऑल ITC हमें अच्छा लगता है and we have an ad rating on the stock with the target price of 460. Thank you, Amit. अगला क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंस में से है. सो वीर, दिस इज फॉर यू. If you can share your view on SBI Card, Bandhan Bank and Bajaj Finance. Sure. Thank you for the question. So I'll talk about Bandhan Bank and Bajaj Finance. So we like so Bandhan Bank was a stock which we are positive in, which we were positive in, and there were 3 reasons for it. Number one, we like the way the bank has over many quarters improved its asset quality. Number two, we are currently also very bullish on the microfinance industry, and Bandhan Bank being a dominant player in this industry. We thought that this would be a good tailwind for the company. This was number two. Number three, over the years, bank's senior management was also strengthening at good levels. And number four, the valuation at which Bandhan Bank we are getting at was also quite attractive. These were some of the reasons why we are bullish on Bandhan Bank. However, recently there came a news about a sudden exit of their MD CEO. Now we believe that this comes at a very wrong time when the bank was actually going through a good phase. Having said this, as of now, we do have a buy rating on that stock, but this sudden news and exit might derate the bank in some time, and therefore I think the investors who do not have a very strong risk appetite might consider not taking any decision on Bandhan Bank as of now. Now talking about Bajaj Finance. So on Bajaj Finance, we have a ad rating with a fair value of 7,800. So if you look at their Q4 result, they delivered a very strong loan growth of 34%. However, we expect, and also the management has indicated that the financial year 25 would be a year of normalization. We can't expect the loan growth to be at this high level. So we expect it to come down in high 20s. There would also be some NIM compression within the bank, and the credit cost, which is currently at very low levels, should also go ahead from these levels. So some sort of earnings cut hoga for Bajaj Finance. But having said this, we are still positive and we have an ad rating on Bajaj Finance. Thank you. Thank you, Veer.
Next question is for Pankaj. Pankaj, can you please share your view on Larsen, and also if you can briefly give us your view on real estate sector? Yeah, thanks, Purvi. So on Larsen, we have a sell rating. अगर आप देखेंगे तो past several quarters we have been saying reduce or sell on the stock. और इसमें हमारा जो टारगेट प्राइस है 3100 रुपीज का है. इसमें एक मेजर फैक्टर जो हमने देखा है एक तो वैल्यूएशन है, क्योंकि अगर कंपनी का जो इम्प्लाइड वैल्यूएशन अगर हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड बिजनेस का जो कोर बिजनेस का करीबन 34 टाइम्स है ऑन 26. सो दैट सीम्स ऑन द हायर साइड वर्सेस व्हाट वी आर वैल्यूइंग ऑन 23 टाइम्स. और दूसरा अगर देखेंगे जो एक्सपोजर टुवर्ड्स द सऊदी प्रोजेक्ट्स, सो वहां पर ऑफ लेट अभी कुछ स्लो डाउन रिलेटेड न्यूज आ रही हैं कि जो नियम प्रोजेक्ट है वहां पर कुछ स्लो डाउन हो सकता है. ये सारी एक अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क दिखता है. प्लस जो न्यू ऑर्डर इनफ्लोज है इस साल जो हमने देखा है, एक तो इलेक्शन की वजह से जो टुवर्ड्स Q4 इम्पैक्ट हुआ है, Q1 भी जो ब्रॉडर इंडस्ट्री सेंस है कि थोड़ा स्लो डाउन रहेगा. तो ये एक नियर टर्म एक ऑर्डर स्लो डाउन का रिस्क है ऑन द डोमेस्टिक साइड. प्लस जो सऊदी का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज रहा था लास्ट ईयर वो ये साल कंटिन्यू होगा, वो एक बड़ा चैलेंज है. सो इस वजह से L&T इज अ सेल एज ऑफ नाउ विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 3100 रुपीज. रियल स्टेट पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन रखते हैं. रीजन आप देखेंगे अभी भी कंपनीज जो हैं जितनी बड़ी कंपनीज है दे आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स. गोदरेज हो या मैक्रोटेक हो, DLF एंड ऑल. So Prestige, for example, so these all companies are reporting very strong volume growth and इनकी launch pipeline अभी भी strong है. और ओवरऑल आप सेक्टर की बात करेंगे तो अभी भी जो सिस्टम में इन्वेंट्री है दैट इज ऑन अ लोअर साइड, से 14 months काइंड ऑफ इन्वेंट्री इज स्टिल देयर. सो एक आगे का लॉन्च पाइपलाइन स्ट्रांग है, सिस्टम में इन्वेंट्री कम है एंड कंपनीज आर सेलिंग वेल, तो सेल्स आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है. प्राइस अप्रिशिएशन हुए हैं तो थोड़ा वो इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो ओवरऑल यहाँ पर रियल एस्टेट पे एक पॉजिटिव व्यू है. अगर इसमें आपको स्टॉक देखना है तो हम इसमें इस लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में काफी बड़ी रनअप आ गई है तो थोड़ा डिक्लाइन पे हम स्टॉक्स देख सकते हैं. उसमें DLF देख सकते हैं, प्रेस्टीज एंड मैक्रोटेक देख सकते हैं. मैक्रोटेक पे हमारा 1260 का टारगेट प्राइस है, एड रेटिंग है. DLF पे 840 है एज ऑफ नाउ. पोस्ट रिजल्ट वी मे रिव्यू एंड सेम विद द प्रेस्टीज वेयर वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ 1160. वी मे रिव्यू पोस्ट. So that's it from. Thank you, Pankaj, for that elaborate answer. अगला सवाल मेटल में से है. अमरजीत, अगर आप नैल्को पे कुछ बात कर सकते हैं प्लीज. ओके, सो नेल्को में सॉरी, नेल्को में लास्ट थर्ड क्वार्टर में नंबर हमारा अच्छा था. एबिटा जो भी नंबर कंपनी दिया था, हमारे एबिटा से जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन उससे अच्छा नंबर आया था, मेनली बिकॉज ऑफ द लोअर पावर कॉस्ट. बट अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिना प्राइसेस रिमेन रेंज बाउंड. हम एक्सपेक्ट करके प्राइस सेम रहेगा बिकॉज ऑफ द सरप्लस इन द मार्केट एंड लिमिटेड कॉस्ट सपोर्ट. और स्टॉक में काफी रैली हुई अगर रिसेंट पास्ट में देखोगे तो. और हमें लगता है कि जो आने वाला जो अर्निंग्स है, जो पैट ग्रोथ है फॉर FY 24-26 रिमेन स्टैग्नेंट. तो इसके हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड है फेवरेबल बैठता नहीं और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगता है, इसलिए हमारा सेल रेटिंग है 90 रुपीज का फेयर वैल्यू अभी. Thank you, Amarjeet. Viewers, since we are closer to the time, I'll take a couple of last questions. Since एक question healthcare में से है जहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब के ऊपर व्यू पूछा गया, तो I'll just quickly say that उस पे हमारा एक एड रेटिंग है और फेयर वैल्यू 2360 है. क्वार्टरली नंबर्स एक्सपेक्टेड है जो कि काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है. अराउंड टॉप लाइन में आप देख सकते हैं 12 to 15% का ग्रोथ, और प्रॉफिट में अगर आप देखें तो 40% प्लस ग्रोथ दिखेगा. ये नंबर्स आएंगे नॉन कोविड बेस पे आएंगे, और रियलाइजेशन पर टेस्ट पर पेशेंट भी अगर देखें तो 5% इंक्रीज हो सकता है स्टॉक के लिए. सो वी हैव अ एड रेटिंग ऑन द स्टॉक. अगले दो क्वेश्चन जो है वो श्रीकांत सर आपके लिए है. पहला तो अगर आप सर कैन यू से कि कौन सा सेक्टर है जो फोकस में हम रख सकते हैं लाइफ, बिकॉज मार्केट इज एट लाइफ टाइम हाई. इलेक्शन के चलते पे कौन से सेक्टर को फोकस में रखा जा सकता है या ध्यान दिया जा सकता है. एंड लास्टली अगर आप निफ्टी लेवल्स पे कुछ बात कर सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट. ओवर टू यू सर. यस, सी लाइक जैसे भी मार्केट एक स्टेज पे आ चुका है जहां पे हमें काफी सारे स्टॉक्स या सेक्टर्स में कुछ एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ वैल्यूएशंस दिख रहे हैं.
और साथ ही साथ हमें बड़े इवेंट को भी फेस करना है। ऐसा नहीं कि ये एक ही इवेंट है, इसके बाद भी और भी काफी सारे मल्टीपल इवेंट्स आने वाले कुछ महीनों में लाइंड अप है। और अगर हमें इन्हीं सभी इवेंट्स को अगर फेस करना है और साथ ही साथ वो पर्टिकुलर रिस्क के साथ अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जहां पे हमें लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में, यानी कि नेक्स्ट 6 to 12 months में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना है जहां पे एट करंट लेवल्स आल्सो देयर इज डिसेंट अपसाइड इन स्टॉक्स और इन दैट पर्टिकुलर ओवरऑल बास्केट, और जहां पे लाइक मल्टीपल चॉइस हो। तो मुझे लगता है कि एनबीएफसीज ये एक ऐसा सेक्टर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे अगर हम फोकस करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि एट करंट लेवल्स आल्सो देयर इज अपसाइड, यानी कि उतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस राइट नाउ नहीं है। साथ ही साथ फंडामेंटली अगर इनके वैल्यूएशंस को देखें तो कम से कम 15 से 20% की अपसाइड करंट लेवल से भी बनती है, यानी अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो ये अपसाइड जो है वो और भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ से 6 से 8 महीने में जितने भी बड़े इवेंट्स आ रहे हैं उसको पर्टिकुलरली हम काफी अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं। अच्छा, इवेंट्स के कुछ आउटकम की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे ओवरऑल इन लास्ट 12 to 24 months ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर बढ़ाया है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डिमांड क्रिएट हुआ है फॉर रियल एस्टेट, मुझे लगता है कि ऑलवेज जब ऐसा सिनारियो बनता है तो उस सिनारियो में क्या होता है कि जॉब क्रिएशन होता है, और जितना जॉब क्रिएशन होगा उतना बोरोइंग की जो डिमांड होती है वो और बढ़ती है, और जितनी बोरोइंग बढ़ेगी उतना मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बैंक्स के साथ साथ एनबीएफसीज को भी जाता है। इसके अलावा अगर हम रेट साइकिल की अगर बात करें तो यूएस में जो इकोनॉमी रिलेटेड जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन के नंबर्स है, या तो जॉबलेस क्लेम्स है, या तो वेज रिवीजन या वेज रेट्स की अगर बात करें, तो ओवरऑल इंडिकेशन आ रहा है कि वहां पे जो इंटरेस्ट रेट्स की दरें हैं जो जून में शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे रेट कट आ सकता है, वो अभी डिले हो चुकी है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये जो रेट कट है वो ईयर एंड तक आ सकता है। बट फॉर इंडियन मार्केट्स इट वाज लाइक वेरी क्लियरली नोन ऑन द स्ट्रीट कि जो भी इंटरेस्ट रेट शायद अगर कट आता है तो वो लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर हो सकता है, या तो सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के दौरान हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रेट कट बन सकता है। अगर ये रेट कट बनता है तो उसका बेनिफिट अगेन एनबीएफसीज को जाएगा, बैंक्स को तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन एनबीएफसीज को भी जाएगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एनबीएफसीज में वैसे देखा जाए तो कई सारे ऐसे स्टॉक है, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस, इंक्लूडिंग AMCs, including few other like related maybe microfinance sort of companies। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है ये बास्केट काफी अट्रैक्टिव है, और हमारे पास हमारे कवरेज में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है कि जिनमें अभी भी अपसाइड बाकी है। जो हमारे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, वीकली वेव्स, या तो मे बी ऑन द वेबसाइट इफ यू गो एंड चेक, आपको पता चलेगा कि कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं इवन एट दिस लेवल्स। तो मैं कहूंगा कि ये एक सेक्टर रहेगा कि जहां पे आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर निफ्टी के लेवल्स की अगर बात करते हैं, या तो इलेक्शन के दौरान क्या एग्जैक्टली मार्केट का माहौल बन सकता है, अगर हम उसके ऊपर कुछ पिक्चर ड्रॉ करने की अगर कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए मार्केट ये ऑलवेज एक इवेंट के पहले काफी वॉलेटाइल होता है, और हमेशा एक इवेंट के आसपास हम मार्केट में काफी सारी कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, या कॉल बाइंग, पुट राइटिंग देखते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि विक्स के जो लेवल होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जितना विक्स बढ़ेगा उतनी मार्केट में मैं कहूंगा कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, या बिकॉज ऑफ राइज इन द वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ेगा। ओके, आइदर और। बट ब्रॉडली मुझे लगता है कि ऑन इमीडिएट बेसिस 22,300 ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, काफी क्रूशियल सपोर्ट है। 22,300, 22,300 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इन लेवल्स के नीचे हम मार्केट में और करेक्शन एक्सटेंड होते हुए देखेंगे, और शायद उस केस में हम 22,000 तक जा सकते हैं। 21,800 ये प्रीवियस स्विंग लोवेस्ट लेवल है। अगर इन लेवल्स को अगर मार्केट तोड़ देता है तो फिर मार्केट में वापस से रिबाउंड करना मुझे लगता है कि काफी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि वो जो रिबाउंड भी आएगा उस रिबाउंड में उतना दम नहीं रहेगा।
साथ ही साथ अगर यहाँ से मार्केट में अगर तेजी बनती है तो 22,800 के ऊपर तेजी बनेगी, जो मार्केट को 23,000 23,100 तक लेके जा सकती है। तो अगर ओवरऑल रेंज की अगर बात करें और अगर टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो हमें लगता है कि मार्केट इसी पर्टिकुलर रेंज में यानी कि 23,000 22,000 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। लेकिन इवेंट के बाद अगर मार्केट 21,800 के लेवल्स को तोड़ता है तो फिर ये मार्केट के लिए एक और भी लिक्विडेशन या तो सेलिंग प्रेशर इनवाइट कर सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और हायर लेवल्स पे जैसे मैंने कहा, अगर मार्केट 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी बनेगी। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन 50,000 के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने अभी बताया 22,300 22,800 इन लेवल्स के ऊपर फोकस करें। वेरी शॉर्ट टर्म में फोकस करना है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पे क्या होगा ना कि एक जो इलेक्शन का जो इफेक्ट होता है कि अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है जैसे उसका ओवरऑल अप्रोच है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ आजकल आता है, रोड्स आते हैं, रेलवेज, डिफेंस, पोर्ट्स। अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर जैसे अभी तक करंट गवर्नमेंट का फोकस रहा है, वो फोकस और अच्छा हो सकता है अगर इसकी पॉसिबिलिटीज अगर बढ़ती है जीत के आने की। तो फिर क्या होगा कि नेचुरली ये पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि आईआरबी इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, एनसीसी या लार्सन, इसमें क्या हो रहा है कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि मेटल्स एंड माइनिंग्स के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज ओवरऑल अगर आप मेटल माइनिंग्स की अगर बात करते हैं तो ग्लोबली यहाँ पे हमने काफी बड़ा एक इजाफा आते हुए देखा है। किसी ने मैंने देखा कि कॉपर के ऊपर पूछ रहे थे, और कॉपर में अगर देखा जाए तो वैसे वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज बढ़ते जा रहा है, और बिकॉज ऑफ अगर शॉर्टेज बढ़ता है तो नेचुरली प्राइजेस बढ़ते हैं, और प्राइजेस बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है या इम्पैक्ट होता है वो कंपनीज के ऊपर आता है। तो जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर है या तो मे बी वेदांता है, जो डाइवर्सिफाइड काफी कंपनी है, इनको इसका बेनिफिट हो सकता है। एनएमडीसी है, मॉइल है, इनको भी इसका बेनिफिट जा सकता है। तो विद अ वेरी लाइक शॉर्ट टर्म व्यू यानी कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज व्यू अगर फोकस करना है तो इंफ्रा पे फोकस करें, मेटल्स पे फोकस करें, माइनिंग स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें। आई थिंक वहां पे अच्छे खासे मौके बनेंगे इन्वेस्ट करने के लिए और साथ ही साथ ट्रेड करने के लिए। दैट्स ऑल। Thank you, Shrikant, sir, for that very in-depth answers. So with this, we come to an end for our webinar today. So before we end, dear followers, if you are on all the social channels, please follow us on Telegram, Instagram, and Twitter if you haven't already, for the regular research updates and the stock ideas that we come out with. And we really appreciate all the questions being asked. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.